मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, कौन आएगा? All right. Yes. All right. So I have something of value in my pocket here. मेरी जेब में कुछ चीज है जो बहुत मूल्यवान है। At one time, this used to be very valuable, एक समय था जब ये मेरे लिए बहुत कीमती था, but now it's not so valuable anymore. अभी ये उतना मूल्यवान नहीं रहा, But it still has value. लेकिन फिर भी उसका मूल्य तो है। I have a $1 bill. मेरे पास एक नोट है जो $1 का है। So is there some value in this? क्या इसका कोई मूल्य है? When I was a boy, there was a lot of value in this. और जब मैं छोटा लड़का था तो मेरे लिए बहुत कीमती थी। So do you want this? Yes. Okay. Now, so why does he want that? उसको ये क्यों चाहिए? It has some value. How much value does it have? उसका कुछ मूल्य है। Maybe 70 rupees. लगभग Okay. 70 रुपए That's के a करीब very मूल्य है। good way of looking at it. There's other ways of determining the value. What can he buy with maybe 70 rupees? 70 रुपए से क्या खरीद सकता? Maybe all the men say lunch, food. सब पुरुष खाएंगे कुछ खाने की चीज। What else could he buy? और क्या खरीद सकते? What is she saying? No, he doesn't. I can promise you that. But there are many things. Maybe he could take a ride across the city. हो Right? सकता है सड़क शहर में घूम ले उस पैसे से, Maybe he could have some food. या कुछ खा ले, Maybe he could have some chocolate. कुछ चॉकलेट्स खा ले। But there is value in this dollar, right? लेकिन इस डॉलर का कुछ मूल्य है। Is the value in the dollar, or is the paper worth anything itself? कागज का मूल्य है या इसके अंदर कोई मूल्य रखा है? What we believe it to be, what is on the inside is valuable, right? इसके अंदर जो है वो मूल्यवान है। Okay. What about now? अब क्या होगा इसका? It's much smaller. बहुत छोटा हो गया। Is it valuable? क्या अभी मूल्य है उसका? You want it? Yes, he still wants it. वो मुचड़ा हुआ भी चाहिए उसको। It still has value. It doesn't उसका फिर भी matter मूल्य है, if it's all crumpled up, right? चाहे कितना ही हम उसको मुचड़ा हुआ करते। What about now? अब क्या होगा? Is it valuable? क्या अभी भी मूल्य है उसका? उठा लो। He still thinks it's very valuable, right? अभी भी वो सोचता है कि उसका मूल्य है। Okay. I have one more question. एक और सवाल, What if we treat it very badly? अगर हम इसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव करें तो क्या होगा? Still value. Yeah, no, I'm not going to tear it. If you put tape on it, you can still take it to the bank. Is there value? You still want it? Yes. Here's the point. पॉइंट जो बोलना चाहते You हो all ये, know the point already. आप पहले ही समझ गए मेरी बात। Lives are valuable regardless of the outward condition. जीवन सभी मूल्यवान है, बाहरी परिस्थिति कुछ Now, because of sin, we look at the outside and we don't see the value in the way that we should. पापी होने के कारण, पाप के कारण हम बाहर देखते हैं उसके अंदर का मूल्य जैसा देखना But the चाहिए Lord नहीं। wants us to look past that. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पार जाकर देखें। Just like this dollar, lives can become wrinkled. और जैसे ये डॉलर मुचड़ गया था वैसे हमारे जीवन भी मुचड़ सकते They can be thrown on the ground and everybody says that's worthless. हैं। और लोग उसे जमीन पर फेंक कर कह सकते हैं इसका कोई मूल्य नहीं, There's nothing there. उसमें कुछ भी नहीं, Filth. सब गड़बड़ है, But there's still value underneath. लेकिन फिर भी उसमें एक मूल्य है। The Lord wants to give all of us a burden to look past the front plastic of sin. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास एक ऐसा मूल्य हो कि हम पाप के उस रुकावट के पार, पाप के पर्दे के पार जाकर That we will have a burden because there is value there. चूंकि उसके अंदर हमें एक मूल्य दिखेगा तो हमारे अंदर उसके प्रति Something बोझ can होगा be changed. कि हम उसमें कुछ बदल सकें। I know someone who, when they were younger, they had a meeting with the Lord. मैं किसी को जानता हूँ, When they were young, they
उनका जवानी में या कम उम्र में परमेश्वर से मुलाकात होगी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। But they made many poor choices. लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कई गलत चुनाव कर लिए, And this person left the church. तो इस व्यक्ति ने चर्च छोड़ दिया They actually became an alcoholic. और बहुत शराबी हो गए, They had trouble keeping a job. नौकरियों में बने रहना मुश्किल होता था They had trouble just living. और जीना भी मुश्किल था। Was there value still in that person? क्या उस व्यक्ति में फिर भी मूल्य है? There was. There were people that continued to speak into his life and showed him love. और कई लोग थे जो उन्होंने उससे प्रेम से बात करना जारी रखा और अपना प्यार दिखाते रहे। There was a long cycle in his life of more than 20 years of just pain and suffering. और उसके जीवन में 20 साल तक एक ऐसा चक्र चला जिसमें वो दुख और दुख भोगता ही रहा। But eventually he began to turn back to the Lord again. लेकिन आखिर में वो फिर प्रभु की तरफ मुड़ने लगा। That man is now a missionary in a foreign country. अब वो व्यक्ति एक विदेश में जाकर मिशनरी का काम कर रहा है। And some of the reasons that happened was because other people saw value in his life. इसके पीछे ये सब होने के पीछे एक मुख्य कारण ये भी था कि लोगों ने उसके जीवन में एक मूल्य को While देखा। this man was still living a terrible life, I know a pastor who called him and said, "There is value in your life and you are supposed to be a missionary." जब ये व्यक्ति बहुत भटक के बुरे जीवन में चला गया था तो भी मुझे याद है एक पास्टर ने इसको फोन लगा के बोला था अभी भी तुम्हारा मूल्य है और तुम एक मिशनरी बन सकते हो। And the Lord turned him again और परमेश्वर ने उसको फिर से बदल दिया because there was value in his life. क्योंकि उसके जीवन में एक मूल्य था। We want to see the value in others' lives. हम दूसरों के जीवन में एक मूल्य देखना We चाहते want to give honor to that. हैं और हम चाहते हैं कि वो आदर उनको दे। We want to see God move upon that value. हम देखना चाहते हैं कि उनके उस मूल्य पर परमेश्वर फिर से कार्य करे। So let's give him a big hand. इसके लिए हम ताली बजाएं।